Sheetal, wonderful to see all of you. थोड़ा सा हल्का सा मुझे लगता है यहाँ पर we may have some challenge with the Wi-Fi. The electricity keeps going and coming in the hills here. It's cold and यहाँ पर थोड़ा challenge है. कल मैं देख रहा था कल दिन भर. So we had electricity coming and going. So अगर होगा तो I'll switch on to whatever other medium which I have, which we will see. And all of you who joined me on YouTube, welcome to this week's Happy Minds. And this is Happy Minds number 1177. And we start with meditation, and that we have already done. And good to see so many of you for the meditation for this week. And like I was sharing before the meditation started, that the life is just passing by. Life तो गुजर रही है, जिंदगी तो गुजर रही है. कम से कम हम ना गुजरें उसके साथ. हमें कुछ करना चाहिए. We should ensure that this life of ours, which is a beautiful gift, एक अच्छी blessing मिली है, इस गिफ्ट को कैसे हम यूज करें, क्योंकि गिफ्ट हमारे हाथ से हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल, ये गिफ्ट हमारे हाथ से ऐसे कम होते जा रहा है. So just want to share this and start Happy Minds on this note. I have a beautiful sharing for all of you ready, which I'm sure if you were to enact and implement and make it a part of your life, the coming year, the year 2024, can be, could be, should be the best year ever for all of you. That's the power of what I'm going to share with all of you. So look, wait for it. But before that, जो लोग पहली बार Happy Minds में आए हैं, just want to share that we start with meditation, and after meditation हम लोग एक छोटा सा round of sharing करते हैं of some success stories of people who have done something amazingly well, who know me, who have been a part of my programs or who have been in Happy Minds. तो वो कुछ share करते हैं, and they've something good, they've done something good in life, they feel that it's worth sharing and talking. तो फिर मेरे से share करते हैं, and I share a few of those stories in every Happy Minds. तो वो हम लोग करते हैं, and then I have my sharing which I do for the week, which I call as weekly shots. And all those who attend, all those who are a part of Happy Minds, in my eyes, I see you all as seekers, because that's what we all are. We are seeking a better way to live. We are seeking a way to maximize our stay on this planet. We are not believing anything. We are not holding on to anything. We are just seeking. और जो seeker होता है ना, फिर वो हर चीज को एक फ्रेशनेस से देखता है, वो सीख कर रहा है, उसके अंदर एंजाइटी नहीं होती है, उसके अंदर कोई ऐसी दुविधा नहीं होती है. Maybe I'll take a session on this very subject of seeking. What a seeker is all about. How is he different from a believer? How is seeking so beautiful in life? And what if we could bring this element of a seeker in our life in as many roles, as many aspects, as many times as possible. So शायद कभी लूंगा उसमें भी एक HM. But I see you all as seekers. So जो लोग हफ्ते के हफ्ते, हर महीने, हर साल, सालों साल तक हर Happy Minds में आते हैं, I've got some kind of an analysis done, which I'll share also with you about Happy Minds. So you have been there with me as seekers, and so welcome one more time to this week's seeking time. So उससे पहले कुछ success stories which I thought of sharing with you. This is not a success story. This is a lovely gesture from a Chrysalis, from one of my students, Tej Singh Rathore. And Tej Singh Rathore, he is from Jaipur, but work-wise, he is staying in Noida. And last week I was in Jaipur. I took my Happy Minds from Jaipur. तो उसको मालूम पड़ा कि मैं जयपुर में हूँ. So he messaged me on social media that मैं आपसे मिलने आता हूँ. My team was in touch with him. So he came all the way from Noida to Jaipur to meet me, and after Happy Minds, he was there at the hotel to meet me, and such a lovely gesture to come all the way. And he did get me some nice goodies, some nice gajak of Jaipur, and loved relish them. पूरा हफ्ते में खत्म कर दिया हमने वो गजक. Target था ना खत्म करने का. So love you, Tej, if you're there, for this wonderful gesture of yours. I don't know if you're there today or not, but he's been a regular for Happy Minds and doing awesomely well in his business. They're into panels, manufacturing and distribution. The manufacturing happens in Taiwan, and they're doing the entire distribution network across the country. I think they are one of the significant players in this industry. So maybe he will watch it in YouTube, and
and it will be there. So this is one. Second is Amit Farande, one of our Chrysalis, one of my students. He's got a business of transport and buses. He says, "Sir, we are a family, are happy to announce our big achievement of 250 electric buses, which will be operated under contract with BMTC Bangalore." So Bangalore Municipal Transport Corporation, jo bhi, I think BMTC wahi hoga. So they have given 250 electric buses, which they will be operating. And he says the inauguration was done in December, 26th of December, at the hands of Honorable Chief Minister. And we're looking forward to a great time serving the people of Bangalore. So all the best and congratulations, Amit, for this beautiful achievement of yours. And another one is from one of our YouTube attendees. She says, "Happy New Year, sir. It was an eye-opener, Happy Minds last week. I reflected back and to do something that I have not done. So no regrets I want to have this year." This is from Pallavi Chaudhary. And she says, "Sir, jigar to sher ka rakhna hi padega, chuhe ka nahi." That was the story last Happy Minds, which I shared. And so many of you could connect with that story, that all said and done, no matter what we are in position, what we achieve, or what we get in terms of a status and positions and hierarchy, जो भी मिल जाएगी, it doesn't matter. अगर जिगर चूहे का है, लेकिन अगर जिगर शेर का है, तो फिर it doesn't matter what position we have, हम कुछ कर गुजरेंगे. So I had shared that story last week. जिन लोगों ने नहीं देखी, maybe you can watch it on YouTube if it's still there. And she says, I took some very powerful points. So all the best, Pallavi, and thank you for sharing. Another sharing is from, it's a beautiful sharing from Gargi Patel. And she says, "Sir, I'm a third-year engineering student. My father sent me the link of your YouTube video. Honestly, I was not very keen on watching it, for he keeps sending such things, such things. And I'm tired of he wanting me to see what he likes." Oh my God. But I don't know why I opened the link and I continued watching your video till the end. Chuha story. I watched it till the end, Chuha story. And I got connected to so many things which you said. And then I made a poster of, "I will make 2024 the best year ever for myself." And that's why I chose this story to share with all of you. And it is on the wall where I study. Thank you, sir. And I have not told my father that I have watched it. I've set a target for myself for my exams. And when I achieve it, I will tell him that he was the source of that achievement. Wow. So love you for sharing this, Gargi, and happy you could take it further. आप उसको आगे लेके गई, मैंने share किया that let 2024 be the best year ever for ourselves. So you took it ahead and you made a lovely small poster which you will be seeing every day while you are studying. So I'm sure you're going to be reminded of making this year a great year. So great sharing. Well, this is it. मेरा बहुत travel हुआ है पिछले, last 1 month I've been traveling. I've taken HMs from all over the places where I've been. So this is one more, those who have just logged in. This is MG from Uttarakhand, Mukteshwar, and it's chilly. It's bone chilly here. It's 0 and 1 degree में खेल रहा है temperature, and the hands as I'm talking to you, as if they're freezing, because इतनी सुविधा नहीं होती है. You don't have centrally lit, centrally air conditioned houses here. So एक heater लगा हुआ है दूर में, which is there, but that's how things are here. A few days back, we had Ajay Nayak visiting us at our office, and it was such a wonderful gesture of that great man to call on us and say, I want to meet MG, and he came all over. Those of you who don't know Ajay Nayak, halka sa main batata hu background. Ajay Nayak is the only non-Swede, Sweden ke jo nagarik hote hain, the Swedes. So he's the only non-Swede ever in the history of a company called SKF to be the MD of SKF. So it's one of the largest corporate houses in the world, and uske MD hai Ajay Nayak, and he happens to be a great friend of hamare apne Rajesh Mandlik. And Rajesh ka ye hamesha raha hai. He has been such a ever supportive person that he ensures that he keeps on connecting me with some great personalities. And unke dost hain Ajay, and Ajay
I had an online intervention with Ajay some couple of years back, and Ajay was also, it's nice of Ajay कि इन्होंने सोचा कि वो आएंगे इंडिया तो मेरे से मिलेंगे, and what a time we had when he was here. So वो बोलते ना कि sitting across a wise man for half an hour or so is worth a month's study of books. तो एक महीना आप किताबें पढ़ लो और आधा घंटा एक वाइज मैन, एक एक्सपीरियंस इंसान के सामने बैठ लो, इट इज इक्विवेलेंट. तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हफ्ते भर किताब ना पढ़ें क्योंकि आपने एचएम कर लिया है. you know so I'm see this is the way to fish compliments. So Ajay was there and I had a couple of hours. In fact, the entire Chrysalis team benefited. He addressed the team. He shared some beautiful experiences from his life, and such a vast, huge range of experience which took him up the ladder of being the MD of such an organization. And they were gems what he shared with us. So that is one wonderful thing which happened with all of us here in Chrysalis. हाँ जी, मेरे साथ हो आप लोग? Just keep on giving me a signal because यहाँ सिग्नल थोड़ा हिला हुआ है. Lovely. इसने बोला नहीं जिंदा हूं मैं सर. हाँ, great. So Rohan, hi Rohan, good to see you. Sunita, Koja, great, lovely to see all of you. You are my saviors, you know that. When I read your names and then I say, wow, चलो ये है तो फिर किस बात की चिंता. चलो, Balram and Ganesh, great. Those who have joined in for the first time for Happy Minds, you can just type in first and maybe the city you're from. So I'll come to know you're from which place. So वो भी अच्छा है. जिंदा है सर. लव यू ऋषि. सांस ले रहे हैं सर. अरे शाबाश. चलो, लव यू प्रशांत फॉर दैट. चलो, ग्रेट. I was there 2-3 हफ्ते पहले in I was at a place in Mulshi from where I took Happy Minds, and there with me in the resort there were a few Chrysalis because it was a function of a Chrysalian there, and there were a few Chrysalian families who were there for the function, and they knew about Happy Minds. So usme se Swati Koite was there, and I did mention it last week, but I'm mentioning it again for a beautiful thing which I realized. तो रात को बहुत देर हो गई फंक्शन में, I think 12-1 बज गया था, and so for me also 12-1 बज गया, and then आप फंक्शन होते हो, so you're there as a part of that event. And next morning, the resort, which is also owned by a Chrysalian, he had organized a beautiful space for me from where I could take Happy Minds. And वो भी एक बड़ा अच्छा gesture है कि कोई इतना सोचता है कि सर के लिए Happy Minds कितना मायने रखता है. So he knew कि मैं आ रहा हूँ resort में, he knew कि वो function के लिए मैं आ रहा हूँ, he knew कि next day सर का HM होगा, he knew सर को रात को late होगा. So Rahul Murkute, the owner of the resort, it was such a nice gesture कि he instructed his staff कि सर के लिए सबसे अच्छी लोकेशन हैप्पी माइंड्स के लिए ये होगी. तो यहाँ पर लाइट का पॉइंट, यहाँ पर इंश्योर करना कि कोई शोर ना करे, यहाँ पर गेस्ट का आना मना कर देना, एंड बी श्योर उनका गर्म पानी ये वो. एंड ही हैड अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी व्हेन आई वेंट देयर एट 6:30 in the morning. It was chilly cold in Mulshi area, and सब कुछ वहां पर उन्होंने रेडी किया. So this is the beauty of an ecosystem around you. So if people know who you are, people align with who you are, they will be there to add on to who you are. That's what I realized. तो उसमें फिर स्वाति भी थी रात को, स्वाति उनके हस्बैंड संदीप, तो दे ऑल्सो वर देयर इन हैप्पी माइंड्स. एंड मैं जहां से बैठा था तो पीछे से लाइट आ रही थी स्क्रीन में, तो आई कुड नॉट सी द स्क्रीन एंड व्हाट पीपल वर कमेंटिंग. कुछ दिख रहे थे, कुछ नहीं दिख रहे थे. So I took the names of a few people, and there Swati, she said namaste sir. So I happened to miss out on that. मैं वो दिखा नहीं. And so normally I read names and then तो वो निकल गया. फिर again she after some time she again said namaste sir, and again I did not see it. And then third time she made one more comment there, and again I did not see it. तो जब HM खत्म हुआ तो she said मैंने 3 बार किया, आपने एक बार भी वो acknowledge नहीं किया. I said I am so sorry I missed out on that, but
द थॉट वाज कि मैं हूँ एचएम में, मैं भी रात को 1:30-2 बजे तक हम लोग सब बाहर थे, लेकिन आई एम कमिटेड, आई वाज देयर फॉर हैप्पी माइंड्स एंड आई फील सो गुड. एंड देन शी सेज कि she is running a school, she's got 1,000+ students in her school, and she says, I now realize, listen to it ना, बहुत सुनना है, बहुत अच्छी बात है. She says, I got 1,000+ students in my school, and I was just waiting for this acknowledgement from my side कि आप मेरा नाम लो. And not because मुझे ऐसा कुछ है, but आप नाम लेते तो अच्छा लगता है. And she says, मुझे एकदम ऐसा हिट हुआ कि जब मुझे ऐसा लग रहा है, in spite of being with you for years, 10-12 साल से हम आपके साथ हैं, तो मेरे बच्चों को कैसा लगता होगा अगर हम उनका नाम लेते हैं स्कूल में. How the child would feel if a class में एक टीचर आती है और टीचर उस बच्चे का नाम ले ले. And she says, हाँ, it hit us. So she says, I will make a conscious effort of making teachers, take the names of students, and that's how it is. So मैं consciously मैं चाहता हूँ कि मैं जितने नाम हो सके मैं पढ़ पाऊँ. मुझे बहुत सारे निकल जाते हैं, टाइम नहीं होता उतना, but that's what my conscious effort is, to acknowledge you and your efforts, that you took the efforts of being there for Happy Minds early in the morning. तो किसको पड़ी है सुबह 7 बजे उठ के किसी को सुनने की, but you all come and you are there. So love you for that. हाँ जी. क्या लिखा है रोहन बाफना ने. रोहन से, सर इन यूरोप एहसास वी हैड पार्टी टिल 3 AM in the morning. ये बताना जरूरी है बेटा. And you had cycled the entire day on Friday on the ship, and we were to cycle the entire day on Saturday also, but you still didn't miss the Happy Minds. And there are so many incidences which I have witnessed being with you. Arey wah. Thank you so much. Love you, Rohan, for sharing this and acknowledging. And I think that's what the entire theme is of today's Happy Minds, and for the rest of my life and for rest of the Happy Minds. But today more so, since you have also mentioned that, and now since you mentioned, मुझे तुम याद आए. हाँ, मुझे याद है. We had cycled, and it was the second last day of our SAS program, and we had been cycling for the last 4 days. Another 4-5 days, another 2 days left. So आपने करीब 250-300 किलोमीटर साइकिलिंग कर ली है. And we had a long day on Friday, and then we had SAS session going on, and then we had raat ko, because it was kind of second last night, bahut hangama, dance, couples were in the best of the elements, and wo humne raat bhar party kari. And then in the morning at aur wo timing bhi alag tha, in terms of Europe timing and the Indian timing. So I just had an hour or 2 or so in between where I could go and rest and come back for Happy Minds, because time का उतना ही time था मेरे पास. So I remember that. Thank you for sharing that, Rohan. And yes, we had the entire day lined up also, where we had to cycle and also take the session in the evening, and then again in the night party, and then again. So I think it's your love and your support and you being with me that makes it happen. So all of you, I think you are the source of my energy. Chalo, great. अरे एक और बड़ा सुंदर सा आया है. क्या आया है? कोई जाने क्या लिखा है. गणेश ने लिखा है, excellent learning of taking names. हाँ, yeah, Ganesh, this is, I think, the simplest thing we can all do is take names of people. उनको, मुझे तो आज तक कभी ऐसा लगा नहीं कि किसी को बुरा लगा जब मैंने उनका नाम लिया है. And I have a habit. I'll tell you, since we are on names, I'll just tell you one more thing. I don't remember surnames. क्योंकि मैंने कभी सरनेम से किसी को बुलाया नहीं, और कभी मैंने सरनेम से उनको बुलाया नहीं. मतलब याद नहीं किया, सरनेम से उनको नाम याद भी नहीं करा, और ना उनको कभी बुलाया मैंने सरनेम से. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गणेश, इसमें क्या नाम आ रहा है आपका? गणेश बोराडे. ठीक है, तो मैं कभी भी तुम्हें बोराडे के नाम से कभी नहीं बुलाऊंगा. आई विल ऑलवेज कॉल यू विद गणेश, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर. बोराडे तुम्हारा पूरा परिवार हो गया, पूरा खानदान हो गया. And I dislike people. I used to dislike teachers who would call students by their surname. अरे उसका पहला नाम है यार, और पहला नाम is very close to the heart. And आप उसका पहला नाम नहीं बुला रहे, उसके खानदान को पूरा याद कर रहे हो. So why you want to call his entire family? बोला come here. अरे पूरा खानदान आ जाएगा भाई.
But if you call Ganesh, come here, Ganesh would feel good, right? So I think that's one thing which you should do. Whether it be your team, whether it be your helps at home or your drivers, whomsoever. पहला नाम उनका, कहीं भी आप जाओ, लोगों से उनका नाम पूछो और पहला नाम से उनको बुलाओ. Nobody has felt bad. Never I have come across a person जिसका मुंह उतर गया, जिसका मुंह फूल गया, जिसको गुस्सा आ गया, आपने मेरा नाम कैसे ले लिया? Unless until you take the name in something in a wrong activity. So that's there. Koja says, sir, attending Happy Minds is not at all effort, sir. It's actually motivation and really a weekly dose. We wait for Saturday to have. Oh my God. Koja, you made my day. God bless you with that. Your shot, we have Shaibal. Your shot in Saturday is great awakening for you. It's short, not short. SHOT. So it's she has written short. So I gave you weekly shots. What are shots? A kick in the backside. It's a shot. So your shot on Saturday is great awakening for years to come. Great learning and greatest schedules. Happy Minds, great meditation. Thank you. God bless you. Sir, फटके के साथ नाम लगा तो ठीक. Okay, chalo. Let's go ahead. We did a kind of a review of Happy Minds, and I'll just share with you a few things which we found, and let's see how we can take it ahead. So in the last 1 year, we missed only one Happy Minds. And I think that was because of travel. So we missed only one Happy Minds. And I felt great when I came to know, we missed only one. We took almost all the Happy Minds. We patted our backs for being firm on taking Happy Minds from wherever we were. So I've traveled a lot in the last 1 year. Traveling was huge, but God has been kind, and you all have been very supportive. We experimented with another analysis. We experimented for the first time with a recorded HM. And most of you could not find out that it's a recorded one till I shared it's a recorded one. And first time I watched myself taking Happy Minds. So I was traveling in a train, and there I could not take Happy Minds. So I record karke dala tha. And then I was watching myself, and I said, this guy speaks well, yeah. Not bad. And I was reading your comments, which was on a recorded one. Those of you did not know that it's a recorded one. You were writing down some things and commenting there. So it was nice to see myself talking and reading the comments of all of you, which I cannot do because I talk and I read your comments, but I cannot see myself sharing there. So this is what we did. And I took 45 different subjects in the last 1 year. A few were a repeat, but I took 45 different subjects. We shared 112 success stories and received 4 to 5 times more of that. And that's a good number. 112 success stories I could share. We always started in all Happy Minds at 7, not even 7:01. The entire year, with all the internet challenges and this and that, 7 means 7. And I felt great. I said, wow, we always started on time. So what I'm sharing with you is, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो. And not only for this HM, 1177 HM हो गए, हर HM टाइम पे शुरू हुआ है. We always started with meditation, and we never missed a meditation. Another review was, we are in December की जो हमने लिया review, तो we are 10% higher in attendance than last December. It's okay, but not a very encouraging number, I felt. So this was some kind of a disappointment for me, that we are just 10% higher in attendance. And what was encouraging was almost 40 to 45% of seekers are coming from last year. Means almost 40 to 45% of you are same which you were last year. So that's good. That, and in this world, जब मैंने ये देखा तो मैंने ये भी देखा कि there's a survey which was done on online programs and online courses. और ये देखा गया कि सिर्फ 3 से 5% लोग जो हैं वो कोई 7 से 10 दिन का प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं. They join in a rush, they join with lot of excitement. लेकिन जो completion rate है कोई भी कोर्स करने का ऑनलाइन वाला is not more than 3 to 5%. एंड जब मैंने ये एनालिसिस के अगेंस्ट अपना देखा कि मेरे पास 40 to 45% लोग वही हैं जो पिछले साल थे. They're continuously coming, HM after HM. And I said, this is not just a 7-day, 10-day, it's a 50-day intervention which is going on. I said, फिर कुछ तो मैं ठीक ही बोल रहा हूँगा.
फिर तो मैं कुछ ठीक ही कर रहा हूँगा कि इतने लोग जो हैं ये आ रहे हैं कंटिन्यूसली. They are not mad. They're wise guys, and I feel all of you are wise and intelligent. Say yes. Not करो अपना हंसा और बोलो हाँ I'm wise and intelligent. Whatever the world say बोलने दो, लेकिन हम तो बोले हम तो wise और intelligent है. So you say yes to yourself. I'm wise, I'm intelligent, I'm smart. So all of you listening to me, you're wise, you're intelligent, you're smart. तो और आप आते तो इसका मतलब कुछ तो है मेरे अंदर. So I patted myself on this. But yes, at the same time, मुझे ये भी लगा कि जब इतने लोग आते हैं and आ रहे हैं और समझदार लोग आ रहे हैं, तो फिर ये और बड़ा होना चाहिए. That 10% rise is not something which I'm very happy about. So we have to have some exponential growth in happy minds. ऐसा मुझे लगा. So this is the kind of a quick analysis and review of happy minds of the last 1 year. तो फिर मुझे लगा कि I should ask some support from all of you. ठीक है? I want all of you to help make happy minds a better happy minds. So would you be willing to support? That's the question. You have a choice. You can type in yes, or you can type in N. You can type Y and you can type in N. Either ways. बहुत मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं है, सिर्फ Y टाइप करना है या फिर N टाइप करना है. चलो झूठ में सब लोग यस कर दो. ओके. बहुत सारे. ओके, ऑल ऑफ यू सिंग यस यस यस. चलो ठीक है, यू मोटिवेट मी, यू इंस्पायर मी. चलो, जब तक है जान मेरी या तुम्हारी. ठीक है, गुड. तो मैं आपसे 4 चीज मांगूंगा. आई हैव रिटन डाउन 4 थिंग्स व्हिच आई वांट फ्रॉम यू. 4 थिंग्स. अब तुमने यस बोल ही दिया है, जिन्होंने नहीं बोला है फिर भी सुन ही लो यार. आई नीड 4 थिंग्स फ्रॉम यू टू मेक हैप्पी माइंड्स मच मोर पावरफुल. Number 1, please do give us suggestions. Please do give us suggestions as to how to make happy minds more powerful. How do we make happy minds reach out to more people? Give suggestions as to what more, what else. I may not be able to implement all, but there would be some things which we would be able to bring out to you from what we hear from you. So please do give us suggestions. That's the first thing which I want. This is not only my happy minds, this is our happy minds. And आपका भी उतना हक है हमें बताने का कि सर इसमें ऐसा कर सकते हैं, चाहे आपका कभी कभी वाहियात ख्याल क्यों ना हो. हाँ, but do give us suggestions about happy minds and how we can take it further, how we can expand and think whatever it is. जो भी आपको suggestion लगता है, please do give us suggestion. That's number 1 thing which I want. I want 4 things from you. Number 1, this. Number 2, share the link with as many friends and family people as possible. Do share a word about happy minds. This is second thing which I want. So give us suggestions. Number 1. Number 2, share the link with as many people as you can. एक सजेशन आया है जो बड़ा वाहियात है. You come every morning like Saturday morning. हाँ जी, मैं सब अपना काम धंधा छोड़ देता हूँ, अपनी जिंदगी जो है मैं सब. But I love you for this, Shaibal. This reflects what happy minds mean to you. So thank you so much. I wish एक समय आए कि ऐसा हो जाए. So number 2, spread the word. Number 3 is a huge request. It's a huge request, and the request is with folded arms. This is what I want from all of you more than anything else. Please, can you make your lives better? Please, can you make your lives better? अपनी जिंदगी अच्छी कर सकते हो. एंड मैं भी सेल्फिश कारण से बोल रहा हूं कि अपनी जिंदगी अच्छी करो, बिकॉज when you become better, addressing a better crowd, right? Addressing an evolved crowd, addressing a transformed crowd, week after week after week, will have a huge impact on what you and me will be sharing here in Happy Minds. It will have a huge impact. So third thing which I want from you, and I said third thing is,
Please, can you make your lives better from what you receive in happy minds? मेरा रिक्वेस्ट है आपसे. I beg of you, I request you, I order you, do whatever you want to listen to, whatever you want to pick up. Please make your lives better. Even the smallest of changes are good enough. Just like Gargi ne share kiya ki I made a small, that chart, and I said I'll make 2024 the best year ever. उसने एक वो chart बनाया. Even that is good. Bring an action from happy minds in a life. Implement something. And that's the third thing. And the fourth thing which I want from you is, don't just invite people for happy minds. Those who आप जिसको जानते हो. You write about your growth. This is what I was in happy minds. This is what I was a year back. This is what I was a month back. This is what I was a few weeks back. And this is what I have become. And for this reason, I wanted to come and join Happy Minds. And you will see how powerful that sharing of yours would be. Don't just send a link, come for Happy Minds. क्यों कोई आएगा सुबह 7 बजे? But जब आप बोलोगे कि this is what I was and this is what I have become, you have the fish in the hook because you are the bait. I don't just want you to put a hook like this without a bait. I want you to put your life as a bait there. जब आपकी लाइफ अच्छी होगी कि आपने वेट कम कर लिया, आपने शुगर नहीं कंज्यूम किया पिछले 1 साल में, आपने अपने एजुकेशन में काम किया, आपने जॉगिंग चालू कर दी, आपने अपने बिजनेस को अच्छा कर दिया, आपने अपने रिश्तों को मजबूत कर दिया, आपकी कम्युनिकेशन में सुधार हो गया, आपने मेडिटेशन चालू कर दिया, आपने कुछ अच्छी आदतें बिल्ड कर ली. When all this will happen, and उसमें से आप कहते हो कि see my communication changed, da 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 da, and I feel that you can also benefit from Happy Minds, and there's nothing which somebody has to lose out. There's no payment, there is no hidden agenda there कि हम आएंगे तो हम ये बेचेंगे या फिर वो आएगा तो उसका ऐसा हो जाएगा. There's no hidden agenda. It's just a pure platform there where I just come and I connect with you. You all come with your purity. I come with my purity. And yes, we do share our programs, our initiatives, because people want to know about initiatives. But जो मैं share करता हूँ और जो मेरे programs होते हैं उसका कोई connection नहीं होता. So I'm not leading you to a program. I'm not leading you to a sale. So there is no agenda as such. And we come with purity, and that's the beauty of Happy Minds. अगर मुझे बेचना ही होता है तो I would choose a right time जहाँ selling अच्छी हो जाए. This 7 o'clock is a bad time for marketing and for selling. It's a very pathetic time for selling. कौन उठ के आएगा सुबह 7 बजे खरीदने के लिए कुछ? So so there is nothing for them to lose, but everything for them to gain, isn't it? So you got to be the bait, and not only for Happy Minds, for all great things. अगर आपने अपने बच्चे को ना कुछ करने को लगाना है तो आप हुक डालते हो. मछली फंसनी चाहिए ना. करने को लगाना मतलब इफ आई वुड टेल इन क्रूड वे कि आपकी मछली फंसनी चाहिए, तो मछली फंसने के लिए आप गए तो आपने डाला अपना हुक पानी के अंदर. तो हुक में कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ बेट, कुछ तो वर्म होना चाहिए ना, जिसको पकड़ के मछली आए खाने के लिए. तो जब आपके पास कुछ वर्म लगाने को नहीं होता ना, तो आप अपनी अथॉरिटी लगाते हो. तो अगर आपने अपने बच्चे को रात को ब्रश करने को लगाना है तो आप जो है आपने हुक डाला कि बच्चा फंसे मेरे हुक में कि रात को ब्रश करे, लेकिन आपके पास हुक में लगाने को कुछ नहीं है. तो आप क्या लगाते हो? अपना पोजीशन. मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा बड़ा हूं, चलो ब्रश करो. सुनता नहीं है, डांटते हो, क्योंकि आपके पास कुछ और नहीं है लगाने को. बट व्हाट इफ यू हैड लिव्ड योर लाइफ इन सच ए वे वेयर यू बिकम द बेट? तो आपने अपनी जिंदगी को उस हुक में डाल दिया और डाला मछली के पास कि देख बेटा, पिछले कई सालों से मैं भी रात को ब्रश कर रहा हूं, and I'm at 45, I'm at 50, and my teeth are okay. I want you to be like that when you are 50, 60, that you have all your teeth intact, you have all your teeth looking beautiful, wonderful. And for that, ये रात को ब्रश करना कितना जरूरी है. आपने अपने आप को हुक में डाला और डाल दिया, और मछली ने वो पकड़ लिया. मछली भी समझदार है आजकल, खाली हुक नहीं लेती हो. मेरे साथ हो कि नहीं? हेलो.
मछलियों मेरे साथ हो कि नहीं? तो एवरी एवरी हैप्पी माइंड्स आई पुट माय लाइफ एज अ बेट, कि मैं आता हूं ना सुबह 7 बजे, मैं कभी लेट नहीं करता हूं। एंड समवेयर some of you as fish, you catch on to that and you go to your meetings at 7, or at the right time, or you don't go to your meetings late, right? When I share about my journey, so you catch on to my bait ना, मेरी जिंदगी को पकड़ते हो ना आप, क्योंकि और कुछ पकड़ने को नहीं है। शब्दों को कितना पकड़ोगे? ऑल फिश आर हियर। कभी आप सोचो कि सर कभी चिंटू बोलते हो हमें, कभी कॉकरोच बोलते हो, कभी फिश बोलते हो। हाँ, बट आई really admire and appreciate, and I love all of you for being there week after week, week after week for Happy Minds. So just want you to connect with this very thought, that if you want to change in your family, if you want to change in your business, you got to be the bait. आपको ही बनना पड़ेगा वो वर्म, क्योंकि और कुछ लगा के मतलब नहीं है। ऑफिस में यू वांट टू चेंज, यू आर द बॉस, तो आप अगर अपनी पोजीशन का फायदा उठा के करोगे तो कोई नहीं फंसेगा उसके अंदर। कोई फंसेगा तो एक आध दिन के लिए फंस जाएगा, वो भी मजबूरी में फंसेगा, दिल से कोई नहीं फंसेगा। बट अगर आप जियोगे और अपनी जिंदगी को वो लगाओगे उसमें, तो रोहन व्हेन ही सेज दैट आई सॉ यू इन एहसास, अब 1 साल हो गया उस एहसास प्रोग्राम को, और एक छोटा सा मोमेंट था, बट लुक एट द वे ही हेल्ड ऑन टू दैट। अरे यार, कि ये उठे भी, साइकिलिंग भी करी, रात को पार्टी भी किया, सुबह एचएम भी ले लिया, फिर नेक्स्ट डे फिर साइकिलिंग करनी है, फिर रात को सेशन लेना है, फिर रात को पार्टी करनी है, और पिछले हफ्ते से भर करके आए हैं, फिर आगे 2 दिन और करना है। सो माई लाइफ वॉज द बेट फॉर हिम, एंड वो मछली ने पकड़ लिया। एंड आई डोंट नो उस बेट से उसको उसकी लाइफ में क्या क्या फर्क होगा, क्या क्या फायदा होगा। That's the power of you being a bait. So this year 2024, I want you to be the bait. I want you to be that worm जो hook में लगे, and for that you'll have to work on yourself. करोगे इस साल को बढ़िया बनाने के लिए? फिश इज नाइस निकनेम। तो मैं जब न्यू ईयर्स का मैसेज सोच रहा था ना लिखने का, तो आई थॉट आई राइट ऑन न्यू ईयर्स ईव, आई थॉट आई राइट अ नाइस लवली मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू ऑन सोशल मीडिया। देन आई थॉट नहीं यार, लेट मी मेक अ वीडियो एंड आई विल पोस्ट अ वीडियो। वीडियो चलते हैं, लोग वीडियो देखते हैं, पढ़ता कौन है आजकल। फिर मुझे लगा नहीं यार, क्या लिखूं, क्या बोलूं, इससे अच्छा कुछ कर लेता हूं, एंड दैट करना शुड बी माई मैसेज। सो ऑन 1st of January आई वॉकड 21 किलोमीटर्स विद माई फैमिली, एंड हम चारों लोग जो है हमने वॉक किया सुबह, एंड इट वाज सच अ वंडरफुल टाइम वी हैड, ऑलमोस्ट 4 hours of walking together, and we went to the temple in the morning, एंड वॉक करते करते वो 21 किलोमीटर हम लोग सोमेश्वर मंदिर गए। हमने रूट ऐसा बनाया कि हम वहां पहुंचे तो हमारा 21 किलोमीटर हो जाए। आई सेड दैट एक्शन ऑफ माइन इज द मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। मैं लिखूं कि न्यू ईयर कैसा हो, कुछ कर लेता हूं ना, एंड जब मैं कुछ कर लेता हूं तो दैट्स व्हाट माय मैसेज इज। एंड द मैसेज जिनको अभी भी समझ नहीं आया, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि माय मैसेज थ्रू माय वॉक इज नॉट दैट यू शुड वॉक, not that you should go with your family for a walk. That's not the message. The message is nobody will give us a great year. Nobody will gift us a great life. We will not see a great life lying on the road and we'll pick it up. We got to make a great year for ourselves. We got to make a great life for ourselves. That's the message. अब मैं उसको लिखूं कि लेट्स मेक अ ग्रेट ईयर, या मैं जी लूं एंड मेरे जीने से आपको समझ में आ जाए यार, ही सेइंग मेक अ ग्रेट लाइफ। मेक, इट इज नॉट हैव। विश यू हैव अ ग्रेट ईयर, मैंने कभी किसी को मैसेज नहीं किया ऐसा, विश यू हैव अ ग्रेट ईयर। आई डोंट इवन से फॉर द डे विश यू हैव अ ग्रेट डे, आई ऑलवेज से मेक अ ग्रेट डे। आई डोंट से विश यू अ ग्रेट डे, आई से मेक अ ग्रेट डे। वी ऑल गॉट टू मेक इट यार, एंड व्हेन वी मेक इट देन वी विल मेक इट। हाँ जी।
हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग. Will you all make a great life for yourself, and that life you put as a bait? मेकिंग इन प्रोग्रेस. तो मैंने आपसे 4 चीजें बोली, उन 4 चीजों पे ध्यान दो. नंबर 3 बड़ा जरूरी है. प्लीज मेक योर लाइफ बेटर. नंबर 4, मेक योर व्हेन यू मेक योर लाइफ बेटर, इट बिकम्स अ बेट. यूज दैट बेट इन योर फैमिली. तुम वो वर्म तो बनो जिसको फिश खाने को तैयार हो. कुछ तो ऐसे वर्म है जिसको फिश देख के बोल रही ना ना इसको तो नहीं खाऊंगा मैं. जहां ये जाता है वहां तो नहीं जाऊंगा. जो किताब ये पढ़ता है वो किताब तो नहीं पढ़ूंगा. जो ये प्रोग्राम्स करता है वो प्रोग्राम्स बिल्कुल नहीं करूंगा. जो इसकी रूटीन है वो बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगा. और बहुत से घरों में ऐसा हो गया है जहां छोटा भाई बड़े भाई की बात नहीं मानता, क्योंकि बड़ा भाई का भी बेट बना नहीं. जहां बच्चा अपने बाप की बात नहीं मान रहा, माँ बाप की बात नहीं मान रहा, बिकॉज वो देखता नहीं उन माँ बाप के अंदर कुछ है मानने लायक. हाँ, प्यार करता है क्योंकि वो रिश्ता है, बट मानता नहीं. मतलब उनकी उनके कदमों पे चलना नहीं चाहेगा. बिकॉज देयर इज नथिंग वर्थ वॉकिंग, एमुलेटिंग, आइडलाइजिंग. And that's what my suggestion to all of you is: live a life in such a way where you become a bait and people get caught in that and they start doing the way you want them to do without telling them not do this. मछली फंसनी चाहिए यार. आजकल मछलियां बड़ी समझदार हो गई हैं. उनको मालूम है कौन सा वर्म खाने का, कौन सा नहीं खाने का. So moving ahead, I just remembered a story which I read long back, and it's a beautiful story, and this is the story for which should be in your mind for the coming year. एक बार ऐसे ही डेविल, डेविल मतलब शैतान. So you have God and you have devil, right? So जो देव हैं तो असुर भी हैं, right? तो ऐसा एक बार डेविल ने जो है एक सेल लगाई, सेल. जैसे कोई साड़ी की सेल लगती है, कोई जूतों की सेल लगती है, तो ऐसी इन्होंने एक सेल लगाई. एब्सोल्युटली कनेक्टिंग विद योर कॉन्सेप्ट ऑफ. हाँ, बेट. बेट मतलब वो बिट नहीं है, वो सुभाष, वो बेट. हाँ, आई एम श्योर थोड़ा लिखने में टाइपिंग में गलती हुई होगी, बट यू गेटिंग द वर्ड राइट. सो एक स्टोरी सुनाता हूं आपको. एंड स्टोरी इज वन डे डेविल जो है, शैतान ने सोचा मैं सेल लगाता हूं. तो पीपल पुट अप डिफरेंट सेल्स. तो इसने भी अपनी सेल लगाई. जो है, जिसके पास जो होता है उसकी सेल लगाता है. तो इसने सेल लगाई कि तो बहुत से लोग गए, बिकॉज बड़ी इंटरेस्टिंग सेल थी. डेविल सेल लगा रहा है, चलो देखते हैं डेविल क्या बेच रहा है माल. तो वहां पर ना भयंकर खंजर थे, डैगर्स. देवर डैगर्स ऑफ फियर, डर के खंजर थे. देवर स्पीयर्स, भाले थे जेलिसी के. बड़े बड़े भाले लगे हुए हैं, सबके प्राइस टैग्स हैं. और सो देवर स्पीयर्स ऑफ जेलिसी. देवर डैगर्स, खंजर थे जिसमें खंजर ऑफ फियर, डर के खंजर थे कि किसी को लग जाए तो उसको डर हो जाए, किसी को ये भाला लग जाए तो फिर उसके अंदर जलन पैदा हो जाए. देवर स्मॉल ब्यूटीफुल वेरी शार्प नाइव्स ऑफ हेट्रेड, कि किसी को अगर वो नाइफ लग गया तो उसके अंदर एकदम नफरत पैदा हो जाएगी. ऐसे बहुत सारे उसके पास वेपन्स थे, और उसने वेपन्स को लगा के रखा हुआ था फॉर सेल. आओ मेरे से खरीदो, मेरे पास नफरत की दुकान है. मेरे पास जलन की दुकान है, सम वेपन्स हैं, मेरे पास डर के बहुत सारे वेपन्स हैं. ऐसा करके लगे हुए थे. तो लोग आए, उन्होंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेल चल रहा है. और जब वो घूम रहे थे, देखा उन्होंने बहुत सारे वेपन्स हैं अलग अलग चीजों के लिए. एक पेडेस्टल पे, एक कोने में, एक बड़ा ही अच्छे कपड़ों से के ऊपर जो है एक नूज, नूज मतलब एक फांसी का फंदा. वो वेपन वो था, वो भी एक वेपन है ना, फांसी का फंदा. तो एक फांसी का फंदा जो है वो रखा हुआ था, विच वॉज वॉर्न आउट. एकदम बैटर्ड था, श्रेड्स थे, मतलब ऐसा पुराना लग रहा था, बहुत यूज्ड करा हुआ था, एज इफ इट हैज बीन यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. वो वहां रखा हुआ था. सो लॉट ऑफ पीपल वेंट देयर एंड से ये किस चीज का वेपन है? ये छुरियां तो चलो हेटरेट की हैं, ये भाले तो चलो भाई जलन के हैं, ये नाइफ्स तो जो है ये सब हम डर पैदा करेंगे, ये सब ठीक है. लेकिन ये जो फांसी का फंदा है,
ये बहुत यूज्ड करा हुआ लग रहा है, ये किस चीज का है? तो वो नजदीक गए, तो नजदीक गए तो दे वर शॉक्ड टू सी दैट दिस वाज नॉट फॉर सेल, दिस वाज जस्ट देयर फॉर पीपल टू सी दैट दिस इज द डेविल्स मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन, और डेविल इसको बेचेगा नहीं, क्योंकि ये सबसे उसका प्राइज्ड, उसका सबसे चहीता हथियार है। तो लोग बड़े, यार ये कौन सा हथियार है जो ये बेचना नहीं चाह रहा है? हेट्रेड बेच रहा है, जेलेसी बेच रहा है, डर बेच रहा है, ये क्या है जो बेच नहीं रहा है? तो जब वो गए तो उसमें लिखा था द वेपन ऑफ डी डी, द वेपन ऑफ डी एंड डी, एंड देन पीपल वेंट अ बिट क्लोजर। बट बिफोर आई टेल यू द वेपन ऑफ डी एंड डी, आपसे पूछता हूं, ये डेविल कौन सा वेपन है जो उसके पास है और वो सबसे दिल के करीब है? ये कौन सा वेपन है जो वो बेचना नहीं चाहता, जिसका कोई प्राइस टैग नहीं रखा है उसने? ये कौन सा वेपन है जो उसको लगता है कि सारे वेपन्स के ऊपर है? इट इज अबव फियर, इट इज अबव जेलेसी, इट इज अबव हेटरेड, इट इज अबव डिप्रेशन। ये कौन सा है वेपन? चलो मुझे बताओ बिफोर आई टेल यू। हम्म। हाँ जी, डर तो बता दिया मैंने, डर इज अवेलेबल फॉर सेल, फियर इज अवेलेबल फॉर सेल। लेजीनेस, ओके, डिवाइड एंड रूल, अटैचमेंट, हम्म, बड़े वेपन्स हैं। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, गुड, बड़े अच्छे अच्छे वेपन निकाल रहे हो तुम लोग। खुद खत्म करना, ईगो, हाँ, डेथ, ना ना डेथ नहीं, डेथ इज तो वो तो रिजल्ट है, वेपन डेथ का डर, ओके, ठीक है। सोल, उसका बड़े बड़े अच्छे अच्छे वेपन है। कोई वेपन फियर का वेपन, इट्स अ वेपन ऑफ फियर, कि अगर वो खंजर लग जाए तो आपके अंदर डर पैदा हो जाए, वो अगर छुरी लग जाए तो आपके अंदर जो है नफरत पैदा हो जाए, राइट? वो आपको अगर कहीं तलवार लग जाए तो आपके अंदर जलन पैदा हो जाए। नो चेंज, ओके गुड। मैंने आपको हिंट भी दिया, इट्स अ वेपन ऑफ डी एंड डी, तो लोगों ने उसको डी को, सम पीपल अंडरस्टूड डी एज डेथ। चलो, लेट मी, द वेपन ऑफ फेस द ट्रुथ, ओ माय गॉड। दिमाग चल रहे हैं तुम लोगों के बाद, गुड, अर्ली इन द मॉर्निंग यू आर थिंकिंग एंड यू आर वर्किंग योर ब्रेन्स। चलो ठीक है, दी, अपने को खत्म करना, डू एंड ड्यू, डू एंड डाई, अच्छा जी, डिप्रेशन, ठीक है, ओके। तो उस शैतान की जो स्टॉल थी, उस स्टॉल में सारे जो वेपन्स रखे थे सेल के लिए, और एक वेपन था जो सेल के लिए नहीं था, वो डिस्प्ले के लिए था, ओनली फॉर डिस्प्ले, कम एंड सी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द इंटायर कलेक्शन ऑफ द डेविल। तो उसकी दुकान में सबसे प्राइज पोजीशन जो था वो डी एंड डी का था, एंड डी एंड डी स्टूड फॉर discouragement and doubt. Listen to me. D&D stands for discouragement and doubt. कि अगर वो फंदा किसी को लग गया तो उसकी लाइफ में डिस्करेजमेंट आ जाएगा, उसकी लाइफ में डाउट आ जाएगा। और डेविल बोलता है कि इससे बड़ा हथियार नहीं है, ये फियर से भी बड़ा है, ये नफरत से भी बड़ा है, ये जेलेसी से भी बड़ा है। एंड व्हाई इट इज द बिगेस्ट वेपन, लेट मी टेल यू दिस। अगर कोई इंसान जेलेसी में है, कोई इंसान अगर यू नो एंगर में है, कोई इंसान अगर हेटरेड में है, किसी को डर है, अगर मैं ये मैं ले लूं, किसी को ये हथियार लग गया और उनके अंदर ये पैदा हो गया, एंड देर इमेच्योर पीपल, सो व्हाट विल हैपन टू देम? दे मे एक्ट अनवाइजली, दे मे एक्ट इन एन इमेच्योर मैनर बिकॉज ऑफ फियर है उनके अंदर, दे मे एक्ट, दे माइट फाइट विद पीपल बिकॉज नफरत है अंदर, जलन है, दे माइट से थिंग्स, कर सकते हैं वो, दे माइट फाइट, और दे मे इवन रन अवे, हो सकता है। बट एटलीस्ट जब ये वेपन्स उनको स्ट्राइक करते हैं, एटलीस्ट दे डू समथिंग, एटलीस्ट दे एक्ट।
लेकिन जिसको लग गया फंदा डिस्करेजमेंट का, डाउट का, वो एक्ट भी नहीं करता. That person does not move. So what this weapon of discouragement does, it makes people sit. जिसको डाउट होता है वो कुछ नहीं करता. जो डिस्करेज्ड है वो हिलता नहीं है. He just sits. He does nothing. And that's the weapon you have to be careful of in 2024. वो डेविल का सबसे prized possession है. It stops you from action. It stops you from doing something. मेरे साथ हो? अगर किसी को बर्बाद करना हो ना, किसी को बर्बाद करना हो, कुछ मत करो, सिर्फ उसको डिस्करेज कर दो. किसी को बर्बाद करना हो ना, उसके मन में डाउट डाल दो और फिर देखो खत्म कहानी. ओहो, हाँ जी. So I want you to be careful of this weapon which is doing the rounds. And the devil is there. वो अपना फंदा लेके घूम रहा है. उसको बेचने का नहीं, लेकिन अगर तुम आगे नजर में और तुम पे लगा दिया उसने, तो हो गया काम. You will not move. And successful living जो है ना, it's a combination of two things. It's a combination of knowing and doing. Now listen to me, next 10 minutes are going to be very, very powerful for all of you. I will just take another 10 minutes. Shall I take a 10 minutes or not? मुझे बताओ पहले. Shall I take another 10 minutes? समर्स है मुझे देने को 10 minutes? या वाइंड अप करूं एचएम आज का? चलो ठीक है. कुछ आत्माएं कह रही हैं सर ले लो सर, 10 मिनट्स ले लो आप. चलिए, थोड़ा सा धूप भी आई है. It's a bit better than what it was at 5:30 when I woke up. चलिए, तो if you want to make a successful living, two things are important. इन दोनों का साथ होना जरूरी है. And that is knowing and doing. I'll repeat, knowing and doing. इनका साथ आने से ही किसी भी एरिया में you know, but you're not doing it. Beta, is my internet on? Am I audible? I just got मुझे एक बार give me a thumbs up on that. Okay, good. I just thought I lost my connection. So किसी भी एरिया में कामयाब होना है तो उसमें knowing and doing का कॉम्बिनेशन लेना है. अगर ये दो सेपरेट हो गए, it's a disaster. It's just like you know love, but there is no loving from your side. This is a disaster. It's frustration. You know, but it's not happening from the action side. So these are half truths. तो half truth क्या है? The more you know, the more you be successful. It's a half truth. क्योंकि other side तो गायब है उसका. Other side is doing. So be careful of these half truths the coming year. So another half truth is positive thinking. That positive thinking will give you a great life. No, it's half truth. Positive thinking की पावर हमें कब मालूम पड़ती है? पॉजिटिव थिंकिंग का पोटेंशियल हमें कब मालूम पड़ता है? when it is expressed in a positive act. अब पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसकी ताकत हमें मालूम पड़ती है when it is expressed in a positive act, and then we realize, oh, ये ताकत है पॉजिटिव थिंकिंग की. But being just a positive thinker is disaster. In fact, it is the most negative thing.
that you are a positive thinker, but you're not expressing it in the form of an act. So you're frustrated because you know, but you're not doing it. It's frustration. For example, अगर आप पॉजिटिव हो कि मेरा वेट कम हो जाएगा, you're positive हो कि मेरी बॉडी अच्छी बनेगी, no, I'm positive, I'll make a good body, I'll make a good body this year, I'm positive. But आपके वड़ा पाव, आपके भजी, आपका एक्सरसाइज का रिजीम सब हेवायर है. आप खाने में कुछ उल्टा सीधा खाते रहते हो, ऑयली फूड खाते हो, स्वीट्स खाते हो. So your actions are in disharmony with your positive thinking. This is disaster. This is the most negative thing that can happen to you. इससे अच्छा होता है कि तुम्हारी थिंकिंग और तुम्हारा वड़ा पाव मैच कर रहे होते, तो वो हार्मनी होती, वही अच्छा होता ना. तो कम से कम लाइफ में फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होता. तो फ्रस्ट्रेशन कब होता है? जब हमारे विचार और हमारी हरकतें ये ईरान तुरान होती है. They are absolutely opposite. So be careful of half truths in your life. So I'm just saying, positive thinking is good, but alone it cannot give you a sense of fulfillment. I want to be a great musician. That alone will not make me a musician. I have to put in hours and weeks and days and months. My positive thinking about being a musician and me acting on that will give me a sense of fulfillment. I know what love is, and I express my love in action will give me a sense of fulfillment. I know joy, and I express that joy in laughter. It'll give me a sense of fulfillment. Be careful of half truths. How I wish in school बच्चों को ग्रेड किया जाता है या बच्चों को रिवॉर्ड किया जाता based on what they do, not based on what they know. सारा grading, सारा recognition, if not all, majority of the recognition, majority of the rewarding is based on what they know. So who knows the most is the topper. What if who does the best is the topper? तो आपके अंदर यहां पर क्या है उस पर ग्रेड करेंगे, आपके हाथों से क्या हो रहा है उस पर ग्रेड नहीं करेंगे. I'm not saying this is not important. This is the beginning, but this is the end. Beginning और end अगर मिल गई, that's what it is. So beginning और end जब मिलता है, you become a winner. And that's what I want to do this year. This year, don't bank on half truths. And second, look for a winner. And you will find winners because they are so findable. They are so obvious. You will find winners in the marketplace. They're making things happen. उनकी लाइफ में मतलब हरकत है. They're making things happen. They are the bell ringers. They ring the bell to wake up people to numerous opportunities. ये लोग घूम रहे हैं मार्केट में, ये सांता क्लॉज वाले बेल वाले नहीं है. ये अपनी लाइफ को जी रहे हैं उस ढंग से, तो बेल बजाते हुए निकल रहे हैं. उठो, जॉग करो, उठो. So these people, these winners are found. They found living in healthy bodies. You will see them living in healthy bodies. So they're not difficult to find, but they're not many in numbers. You will find these winners giving time to the families. You'll find these winners doing their business beautifully well. They're coming with some new products. They're coming with some new ways of doing work. You'll find these winners contributing to society in a wonderful way. You'll find these winners, doing something or the other to make their lives better. You'll find these winners watching Happy Minds and then implementing something from Happy Minds. तो इनको ढूंढना मुश्किल नहीं है. They are the bell ringers. टंग 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 घंटी जाके घूमते रहते हैं. They're inviting you. They're willing to help you. They're saying हमारे क्लब में membership ले लो. That's what these winners are saying. Take membership in our club. So this year, find these winners, and you will not miss on them because they're not quiet souls. They're making things happen. Are you able to connect? So you got to ask yourself this very question. If you were to go back and कि ये
दिस 2024 ईयर, 2024 जो हमारे सामने है, ये हमारे सामने खड़ा है ये साल। तो हम इस साल को हमने कैसे जीना है? तो along with knowing, can we have doing? So I've just told you three things. One is be aware of discouragement. Discouragement will not make you act. Second, I said be aware, be careful of half truths. Half truths will not take you there. And third, I said watch winners. ये हमारे आसपास घूम रहे हैं. And through their lives, they're telling us something. हाँ जी. Hello. To wind up this week's Happy Minds, am I able to connect? And in the same breath, I'll be back to Pune in a few days, and I have a beautiful program for entrepreneurs ready. Those who are entrepreneurs, you can come for the program. There's a program called we are taking a growth summit for entrepreneurs, and it's a beautiful journey which I want them to go through to make their businesses better, make them do things in a better way. And of course, then we have the bigger version of the program, Arasamasti, lined up. So a lot of things happening this year, a lot of new initiatives lined up, right? So if you feel you want to be a part of it, then get in touch with my team to take your businesses to the next orbit. But coming back to Happy Minds, this one, Happy Minds, is Grandmaster of Happy Minds. Wow. Great. Happy you could connect with that. Gives also a lot of more positivity once we go on the positive. Sorry, I could not. Gives us more positivity. Yes, Rohan, absolutely. So New Year started, Chandrasekhar says, with MG Sir Mantra. Oh, yes. God bless you. Which has happened as first HM of year. Absolutely. This is the first Happy Minds of this year. And let's go all out, yaar. Let's make this life of ours in 2024 a life which is the biggest bait. सबसे बड़ा worm बन जाते हैं, फिर देखो क्या मछलियां फंसेंगी यार. You will have fish all over. जो तुम चाहोगे वही फिश पकड़ी जाएगी. तुम बेट तो बनो. For us, D&D meaning changes from today, we will always keep away from it. Bilkul, bilkul. So work on it and make a great life for yourself. And I want to hear, I've told you 4 things that I want from you. Do spread. Let's make Happy Minds a phenomenon this year. That's what I expect from all of you. I want you to become the biggest bait. And I want you to invite people from all over for Happy Minds. And I feel that jitne aayenge na, मेरा उतना ही देने का ना ताकत और बढ़ती जाएगी. And you will see what changes we can bring to this country of ours. This country needs more than ever before. Our kids need action. Our kids need to be in that state where they are producing something or the other, because उनको अच्छा लगेगा जब वो produce करेंगे. So for our kids, for our society, for this country, let's all be on that action mode. Positive thinking with positive action will bring in phenomenal results. और जब आप action करोगे, so a lot of action with some quiet reflection will bring out better and powerful action. I'll share about that next week. Okay? So D&D hit the most. Love you, Rajinder. God bless you. And yes, Sonal, wish you a great year. Chalo, make a great year. Rishi says, sir, because of you, we believe that you are doing your work, should speak a lot. और आप करते हो फिर बोलते हो. हाँ, and unfortunately that's been, but unfortunately or fortunately, मेरे पास ज्यादा बोलने को नहीं होता है यार. और होता भी है तो मैं नहीं बोलता हूँ, because I don't think it's worth talking. मैं बोल बच्चन नहीं हूँ, और ना ही मैंने कभी वो सोचा कि मैं बोल बच्चन बनूं. तो I've been a liver. It's okay if I speak less, but let that speaking come from my life. I have made my life a bait, and I'll keep on making my life a bait. जिसमें तुम लोग फंसो. मेरे शब्दों में ना फंसो, मेरे बोलने पे ना फंसो,
मेरे जीने में फंस गए ना तो मजा है यार. Then I have lived like a great worm, to catch a lot of fish. So, love you for sharing, Rishi. Love you, Hemant. Make a great life and wish you all the best in Constro. अच्छा काम करो Constro में. अच्छा business लेके आओ. अच्छा exhibition. I wish all those who are in Constro, Rohan, Hemant, आप सबका business अच्छा हो. जितने भी Chrysalians, जितने भी लोग Constro में हैं, right? Such initiatives are great. Love you, Sunita, Aditya.